Hey, stop scrolling. I am Akash. I am a second year student at IIIT Una, and today I am here to tell you few factors which can help you grow successful in 2026. So, 2026 is something like not working hard, it's about working in a right direction with the right factors and the right motivation. Now, अब हम बात करेंगे पहले की सक्सेस क्या होती है. सक्सेस कैन बी डिफरेंट फॉर एवरी पीपल. फॉर मी देर आर फोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल. फर्स्ट ऑफ ऑल, very common, money. Financial stability is the most important factor, and then you have to be skillful, then health, and then mental peace. These four factors are very important to become successful in life. Now, today I'll be sharing at least 5 to 6 points through which you can become successful or you can grow in your life. Now let us move to Excel draw. I'll be showing you few points over there. So first of all, what is the most important point in order to get success is आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक हाई हाई वैल्यू स्किल आपको सीखनी पड़ेगी. हाई वैल्यू स्किल कुछ भी हो सकती है, जैसे क्या हो सकता, आपकी वेब डेव हो गई, या फिर आप क्या सीख सकते हो, AIML सीख सकते हो, या आजकल जो ट्रेंडिंग टॉपिक है AIML वगैरह और डेटा साइंस वगैरह, आप ये सब कर सकते हो. करंटली आई एम वर्किंग ऑन डेटा साइंस, सो यू कैन ज्वाइन मी. आई विल बी पोस्टिंग न्यू वीडियोज़ डेली ऑन यूट्यूब, सो you can connect to me on Instagram also and other platforms also. Second important point is you have to build consistency, because consistency is important. You have to build consistency and not motivation. You have to build consistency and not motivation. Like, motivation will help you only for few days, but if you are consistent, then it will help you in a long term. Third important point, which is also a most important point, you have to avoid distractions. डिस्ट्रैक्शंस आपको अवॉइड करने होंगे, क्योंकि आपको अगर कोई घर वाले काम करने के लिए भी बुला लेते हैं, एज यूजुअल सबके बुला लेते हैं, आपको वो सब चीज़ें अवॉइड करनी होंगी अगर आपको कुछ सक्सेसफुल बनना है आपको लाइफ में. उसके बाद आपको फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग एंड डोंट just mug up things, don't just consume things. You have to start creating. Like, don't only watch tutorials, build projects while watching tutorials. For example, if you are learning AIML, so build a model that can build a model that can used input as ages and predict the output ages and etc. You can check on Kaggle etc. There will be much more data sets that will be present. Then fifth important point, which can be which is the most beneficial point, or which plays a most important role, is taking care of health. Everyone avoid this point, but it is one of the most important point of today's video. So you have to take care of the health. And sixth, yeah, you have to handle these failures, because failures, as Virat Kohli said, failures are the most important teacher of your life. So you have to do all these things in order to become good in 2026. First of all, you have to learn a high value skill, then build consistency, and you can watch many videos like motivation videos, but that will not help you. They are a short term consistent videos. अगर आपको लाइफ में कंसिस्टेंट बनना, तो आपको डेली अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखना होगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, इन सब चीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड रखा करो. उसके बाद क्या करना, आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो और क्रिएट करना चालू करो यार. मॉडल वगैरह क्रिएट करना चालू करो, प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करना चालू करो, और बस जो कंटेंट है उसको कंज्यूम मत करो, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करके देखो. उसके बाद आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना, और ये फेलियर्स वगैरह तो आते रहेंगे यार, इन्हें हैंडल करना सीखो.
This is all from my side, and this is all you need to become successful, or you have to, or to be improve yourself in 2026. You can connect to me. I'll be uploading new videos over here, and keep supporting.